Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We are going to provide you support for IIT, JEE, NEET, UGC, then SSC exams, MPSC, UPSC class 9, 10th, 11th and 12th also. You can ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So Unacademy Plus subscription is at flat 10% off discount. So, dear learners, welcome to the class. I am Trupti Deshmukh. I have done my Masters of Computer Engineering. So, I am going to teach you subjects like C, C++, C Sharp, ASP.NET, programming in Python, as well as I am going to teach you the subjects like information technology for class 9, 10th, 11th, 12th, and also computer science for class 9, 10th, 11th, 12th. So, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. So students, let's get started with the today's lecture. So the next thing is Unacademy's awesome special classes. Yes, we are having the live real-time interactions using chats and emojis. Yes, Unacademy के जो हमारे स्पेशल क्लासेस है वहाँ पर आप लोग लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन कर सकते हैं by using chats and emojis. Yes, obviously you are going to have poll leaderboards and you can compete with your friends also. वहाँ पर कुछ polls हो गए leaderboards. So उसमें क्या होगा, आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी and yes you will have the fun with learning. And the next feature of these special classes is you can ask questions using the question tab. You can see the screenshots here. The question, you can type your questions related to the subject and directly send to the teacher also. So ये हमारे Unacademy के some of the special classes के features है. That is, you are going to have live real time interaction using the chat and emojis. Then you can have the live quiz through pros. So pro leaderboards में आप लोग क्या कर सकते हैं? You can have the competition with your friends also, and you can ask the questions using the question tab also. Then next, how to watch these special classes also. देखिए आप लोग क्या कर सकते हो, पहले यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. जो स्टूडेंट्स है वो लर्नर ऐप जो है डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. यू कैन गो टू दी गूगल प्ले स्टोर, और आपका अगर एप्पल का है तो यू कैन हैव दी एप्पल स्टोर ऑल्सो. सो वहाँ पर आप लोग अनअकैडमी लर्नर ऐप के लिए सर्च कीजिए एंड यू कैन डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. देन इंस्टॉल इट, डाउनलोड कर. वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, ओपन दी ऐप एंड क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड. ठीक है, आपका ऐप ओपन हो जाएगा. Then next step is you have to enter your mobile number and OTP. आपका जो करंट मोबाइल नंबर है आपको यूज करना है. then you will get one OTP and based on that OTP you are going to sign up using the email ID. So next step is you have to enter your full name, then your mobile number will be already registered. Then enter your email address and state of the register. So this is the step to watch the special classes. That's the last step is sign up using the email ID. First one, download the Unacademy Learner app, then open the app and click on get started. Then enter your number, that is mobile number and OTP, and lastly sign up using the email ID. Then next step is that is select the classes from class 6 to class 12. It is what goal you are preparing for. The you can select for the competitive exams, as well as if you are going for the class CBC classes 6 to class 12, you can go for that also. ठीक है, CBC क्लास 6 to 12 आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपके डिफरेंट क्लासेस आएंगे, क्लास 6 to class 12 एंड आल्सो द क्रिएटिव कॉर्नर. देन आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट योर ओन क्लास. देन नेक्स्ट, विच लैंग्वेज यू वुड प्रिफर टू लर्न, कौन सी लैंग्वेज में आप लोगों को पढ़ाई करें. सो यहाँ पर सेलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज. सो यू कैन यूज इंग्लिश, हिंदी, और हिंदी एंड इंग्लिश, both mixed. Then next what you are going to do, go to the description of this video, the video which I am playing now, and click on the special class link. यहाँ पर special class की जो link है वहाँ पर आप लोग चाहिए. Then click on notify me and you will get denotified 10 minutes before the class begins. And you can use the code to unlock the special classes for free. So friends, let us continue with the previous topic, that is networking fundamentals. हम लोगों ने कुछ उसके पार्ट्स देखे थे. लाइक हम लोगों ने यहाँ तक देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट द नेटवर्क, देन व्हाट इज अ नेटवर्क,
उसके बाद हम लोगों ने ये पॉइंट देखा, दैट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, क्या नेटवर्क्स के कौन से टाइप्स होते हैं। देन टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द कंपोनेंट रोल्स, कंपोनेंट रोल पे बेस्ड नेटवर्क के कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में देखा लैन, मैन, वैन, एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स रोल हम लोगों ने देखा क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा इंटरनेट एंड इट्स कंपोनेंट्स, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, सुपर कंप्यूटर्स आते हैं, डेटाबेसेस आते हैं, एंड नेक्स्ट विच वी हैव सीन द वर्ल्ड वाइड वेब। नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट हम लोगों ने देखा। नाउ वी विल सी व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहले हम लोगों ने देखा पिछले लेक्चर में www इज, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, इज वन कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेट। www एक इंटरनेट का कंपोनेंट है। उसके बाद हम लोग देखने द अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट आर लाइक फोरम्स, रिसर्च डेटाबेसेस, देन यूजनेट्स, देन ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, देन टेलनेट, गोफर एंड एफटीपी। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं फोरम्स। फोरम्स क्या होते हैं वो हम पॉइंट पहले देखेंगे। देखिए फोरम क्या होता है। द फोरम इज व्हाट वी कैन से, इट इज वन टाइप ऑफ वेबसाइट वेयर पीपल कैन सीक हेल्प एंड एडवाइस अबाउट अ टॉपिक। एक ऐसे साइट होती है जहाँ पर लोग एक दूसरे को कुछ मदद मांगते हैं, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है, दैट इज इफ आई हैव टू फाइंड आउट अबाउट द व्हेन वाज www firstly invented or used. So where people can seek help and advice about a topic, that is nothing but a forum. Then next one is the research databases. So research databases are generally used by the universities and large companies. कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पर इंटरनेट पे बहुत सारे रिसर्च होते हैं, एंड some large companies होती है, they are using some research for their company's growth or some projects likewise. So वहाँ पर जो है हम लोग ज़्यादातर रिसर्च डेटाबेसेस का जो है यूसेज वो देखते हैं। Then next one is the Usenet. एक काम करते हैं, I will enlist all this so that you will have the better idea about it. That is components of internet. So first one was forums. What we can say about forum? We can seek some help, that is it helps, or a forum is, we can write like where people seek help, where people can seek help, that will be better, and advice about a topic. Okay, that is nothing but the forums. Then next one is the research databases. So it is used by generally what we can say universities and large companies. Then next one is the Usenet. So Usenet क्या होता है, देखिए Usenet is nothing but generally discussion group about a specific subject from the latest bands to
फेवरेट पिकनिक स्पॉट्स। और उसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे तो गूगल ग्रुप्स। देखिए यूजनेट में जनरली क्या होता है, इट इज डिस्कशन ग्रुप है कि एक डिस्कशन ग्रुप है अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल लेटेस्ट बैंड्स कौन कौन से मार्केट में, और टू देयर फेवरेट पिकनिक स्पॉट्स कौन से हो सकते हैं। जैसे कि गूगल ग्रुप्स के अंडर भी है यूजनेट जो है वो आता है, दैट इज दिस इज वन ऑफ द डिस्कशन ग्रुप। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, दैट इज IM इंस्टेंट मैनेजिंग सिस्टम्स। देखिए ईमेल्स आप सबको पता है, सब लोगों ने ईमेल्स यूज किए होंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आपको अगर किसी को मेल सेंड करना है by using the internet, that is nothing but the email, whether it will be text format, उसके बाद टेक्सचुअल फॉर्मेट के बाद पिक्चर फॉर्मेट में भी आ गया, अभी यू कैन सेंड द वीडियोस आल्सो। एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, आई डोंट थिंक सो इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम आजकल हर जगह पर यूज होती है, तो इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लाइक आप लोग ऑनलाइन चैटिंग करते हो, लाइक चैट बॉक्स में भी आप लोग चैटिंग करते हो, दैट इज इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम्स। उसके बाद अगर हम लोग और डिटेल्स में जाए इसके बारे में, तो लाइक वाज यूर चैटिंग ऑन द फेसबुक, ट्विटर एंड सो ऑन, बहुत सारे व्हाट्सएप है इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम्स के एग्जांपल्स। देन नेक्स्ट वन इज द टेलनेट, which is remote access protocol, and then next one is the Gopher, which is text or menu driven interface. Then next one is the FTP, that is file transfer protocol. ठीक है, सो ये सारे जो है सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट। So it is really important to understand that the internet is not the same as www. So the internet is to the worldwide as web as Europe to Germany. One is the container and other is an item with a container. So देखिए इंटरनेट के अंदर ये सारी चीजें आती है, दैट इज कि www आता है, ईमेल आता है, FTP आता है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग आती है, गोफर आता है, देन टेलनेट आता है, चैटिंग आती है। ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेट के अंदर आती है। सो www इज डिफरेंट थिंग एंड इंटरनेट इज अ डिफरेंट थिंग। So while internet is a collection of computers or networking devices connected together, www is what? Collection of documents linked via the special links which are called as the hyperlinks. And www forms a large part of internet but is not the internet. So next point which we are going to study is that is internet terminology. Yes, obviously this is a very important part regarding your exam point of view. So we will study that also firstly. देखिए इंटरनेट टर्मिनोलॉजी क्या होती है और उसके बाद हम वन बाय वन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी जो है वो पढ़ेंगे। So before we proceed further, it is good that is if we briefly talk about some internet terminology. So अभी उसके रिलेटेड हम लोग कुछ बेसिक आइटम्स जो है रिलेटेड टू इंटरनेट हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज द क्लाइंट, देन सर्वर, वेब पेज, वेबसाइट, वेब पोर्टल, वेब ब्राउजर, वेब क्लाइंट, URL ब्लॉग, then blogger, blogging, news group, email and email address. So let us see them one by one. So first one is the
client. देखिए, any computer on the networks that requests services from another computer on the internet is known as client. Any computer on the network that requests services from another computer on the network is called as the client. The next one is the server. So any computer that receives request from client computers, processes and sends the output. Any computer that receives requests from client computers, processes and sends the output are known as the server. So the web servers respond to web related request. So what we can see here, there can be other types of servers to handle different types of requests or actions. देखिए, ऐसा हो सकता है कि कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिक्वेस्ट हो, तो उस डिफरेंट टाइप्स के रिक्वेस्ट के लिए ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप के सर्वर्स जो है हम लोग यूज कर सकते हैं इनका. Then next one is the web page. So any digital page or document hosted on internet. Any digital page or document which is hosted on internet is called as the web page. Then next fourth one is the website. Website क्या होती है देखिए अभी, a collection of interconnected web pages designed with a certain goal in mind. देखिए वेबसाइट क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस which is designed with a certain goal in mind. That is nothing but the website. Then next one is the web portal. अभी देखते हैं वेब पोर्टल क्या होता है. A website or service that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others. For example, sites like MSN, then Yahoo, India Times and so on. That is nothing but the web portal. देखिए वेब पोर्टल क्या होता है, a website or service that offers a broad array of resources such as email, forums, search engines, among others, is called as the web portal.
Then the next question is web browser. What is a web browser? वो हम लोग देखते हैं. A program or software on a client computer that retrieves information from web. A program or software on a client computer that retrieves information from a web. क्लाइंट कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम लोग वेब ब्राउजर कहते हैं. that retrieves information from the web. For example, Google Chrome, Mozilla Firefox, then what we can say, Internet Explorer, Opera, then Netscape, then Safari. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसके, है ना. उसके बाद मोज़ैक, and so okay, these are some examples of the web browsers. Then next one is the web client. वेब ब्राउजर हो गया, वेब सर्वर हो गया. अभी देखिए वेब क्लाइंट क्या होता है. We have seen about the what is mean by the client, what is mean by the server, what is mean by the web page, what is mean by the website, and what is mean by the web portal, web browsers. So अभी web client क्या होता है देखिए. So a web client is a program or a component on client side that requests and uses services provided by web server. देखिए एक वेब क्लाइंट क्या होता है. इट इज अ प्रोग्राम और अ कंपोनेंट ऑन क्लाइंट साइड. क्लाइंट साइड पे एक प्रोग्राम में फिर एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है. वो क्या करता है, दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय वेब सर्वर. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, लाइक एग्जांपल ऑफ वेब क्लाइंट्स आर web browsers, a specific web page with components which are fetching and information from web server, then email programs, then file sharing programs, then chat programs, and so. देखिए अगर हम लोग वेब क्लाइंट्स के एग्जांपल देखेंगे तो एक पहले हम लोग देख चुके हैं, दैट इज वेब ब्राउजर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द वेब क्लाइंट्स. उसके बाद अगर हम लोग देखें स्पेसिफिक वेब पेज होता है एक वेबसाइट के अंदर, जिस यहाँ पर से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं. then some email programs are there, then some file sharing programs are there, then some chat programs are there. ये सारे जो है ये these are the examples of the web clients. So I hope you understood these concepts. सो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट. हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड वेब भी देखा था लास्ट लेक्चर में. डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनेट लाइक वी हैव सीन forums, research databases, usenet, email and instant messaging systems, and telnet, gopher and FTP. Then we have seen some of the internet terminology. Till now we have seen what is client, server, web page, website, web portal, web browser, web client.
And in next upcoming lecture, we are going to study what is meant by the URL, blog, blogger, blogging, news group, email, and email addresses. So now let us turn towards this quiz session. So before starting, let me tell you about the syllabus, the reference book which I referred for the today's lecture, that is Information Technology by Sumita Arora for class 10 under the code 402. Okay, so let's get started with today's quiz session. So friends, let us start with today's quiz session. So you will be having total 20 questions and each question will be having 1 minute. So let's get started with that. So here is question number 1. What is long form of LAN? Options are A. Local area network, B. Local allocated network, C. Light area network, and D. Locally allocated network. Your time starts now. So the correct option is A. Local area network is the long form of LAN. The next question number 2 is here on your screen. What is long form of MAN? M-A-N. Options are A. Metropolitan area network, B. Major allocated network, C. Multiple area network, and mainly allocated network. Your time starts now. Time up. So correct answer is A. Metropolitan area network is the long form of MAN. So the next question is here on your screen. What is long form of WAN? Your options are A. Wide area network, B. Wide allocated network, C. Wide area network, and D. Widely allocated network. So your time starts now.
Time up. So correct option is C. Wide area network is the long form of WAN. So the question number 4 is here on your screen. Which of the following is not an example of instant messaging? Your options are A. Google Talk, B. Google Hangouts, C. WordPress, and D. Facebook Messenger. So your time starts now. Time up. So correct answer is C. WordPress is not an example of instant message. Google Talk, Google Hangouts और Facebook Messenger जो ये सारे instant messaging के examples हैं. Then the question number 5 is here on your screen. Which is used for sending text messages online? Your options are A. Instant messaging, B. Email, C. Website, and D. Blog. Your time starts now. So the correct option is instant messaging is used for sending text messages online. Correct option is A. Instant message. The question number 6 is here on your screen. We can do chatting on an IM client. True or false? Your time starts now. Yes, it is obviously true that we can do chatting on an instant messaging client. So correct option is A, true. So we will move towards the question number 7. Networks are useful because A. No one copy your files, B.
you only need one printer per network. C, the computer use less electricity. And D, each user of the network can access files more easily. So your time starts now. So correct answer is D. Each user of the network can access files more easily. That's why networks are useful. Then question number 8 is here on your screen. Internet may be termed as an example of options are A, LAN, B, MAN, C, WAN, and D, all of these. So your time starts now. Yes, internet may be termed as an example of LAN, MAN, and WAN. So correct option is D. All of the above can be considered as the example of internet. Then the question number 9 is here on your screen. The act of writing a post for a blog is called A, blogger, B, blog, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now. So the correct answer is C, blogging. Yes, act of writing post for a blog is called as the blogging. So the question number 10 is here on your screen. A person who writes a blog is called A, blog, B, blogger, C, blogging, and D, blogosphere. So your time starts now.
A person who writes a blog is called as the blogger. So correct option is B, blogger. Question number 11 is here on your screen. Out of the following, which is not the blogging site? A, my blog, B, blogger, C, WordPress, and D, live journal. So your time starts now. So time up. Correct answer is A, my blog is not a blogging site. So question number 12 is here on your screen. Which of the following are Government of India's startup initiatives? Your options are A, Startup India, B, Make in India, C, both A and B and D, none of the above. So your time starts now. So the correct option is both A and B. Yes, Startup India and Making India. Both are the Government of India's startup initiatives. So the question number 13 is here on your screen. Successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So options are A, true, B, false. Your time starts now. So, yes, it is true that the successful entrepreneurs as role models generate more entrepreneurship. So, correct option is A, true. Now, we will move towards the question number 14. Entrepreneurship degrades the standard of living. True or false? So, your time starts now.
Time up. It is obviously not true that entrepreneurship degrades the standards of living. So correct answer is B, false. So let us move towards the question number 15. Which of the following is not developed by entrepreneurships? A. Society, B. Economy, C. Nation, and D. None of the above. So your time starts now. देखिए एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये सोसाइटी, इकोनॉमी और नेशन तीनों को भी डेवलप करता है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप? सो करेक्ट आंसर विल बी नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये तीनों को डेवलपमेंट में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव. So the question number 16 is here on your screen. Which of the following is an example of online transaction? A. E-shopping, B. E-ticketing, C. Both A and B, and D. None of the above. Your time starts now. So both e-shopping and e-ticketing are options of examples of the online transaction. So correct answer is C. Both A and B are the example of online transactions. So we will move towards the question number 17. For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with A. FTP, B. HTTP, C. HTTPS, and D. Any of these. So your time starts now. So time up.
For entering personal and financial information for online transactions, a URL must begin with HTTPS, that is Secure Hypertext Transfer Protocol. तो देखिए पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए, सो उसकी सिक्योरिटी जरूरी होती है, सो दैट्स वाई सिक्योर HTTP यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा. The question number 18 is here on your screen. Which of the following OS does not come under Linux OS? That is A BSD, B Red Hat, C Ubuntu, and D CentOS. So your time starts now. So BSD is the OS, that is operating system, which does not come under Linux OS. Linux ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए रेड हैट उबंटू एंड सेंटोस जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं, whereas BSD does not come under it. So correct answer is A, BSD. So the question number 19 is here on your screen. How many sustainable development goals target are there? Options are A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 169 sustainable development goals targets are there. So the last question number 20 is here on your screen. How many sustainable development goals are there? A 48, B 169, C 15, and D 17. So your time starts now. So there are total 17 sustainable development goals. So correct option is D 17. That is 17. So that's all for today's session, friends.
So the next feature for the Plus and Iconic subscribers. Yes, we are having the exclusive feature for Plus and Iconic subscriber, that is raise a hand. So you can now speak to your favorite educator in live class. Yes, obviously you can ask your doubts also. So now you can clear your doubts instantly with an option to have one-to-one discussion with your favorite educator in a live class. So you can participate in quizzes, vivas, and doubt solving sessions to take your exam preparation to the next level, obviously. And you can have the personalized and highly interactive live class experiences. So you can use my code, that is TD Live, for flat 10% off. So Unacademy, let's start. So friends, Unacademy is freedom to learn offer. So this Independence Day, get the freedom to learn. Yes, this is new offer only for CBSE class 9th. So student, this is the exclusive offer for CBSE class 9. That is, we are pleased to inform you that is our new exclusive offer for our CBSE class 9 learners. That is, if you take up a CBSE class 9 subscription for 2 years, then you will get the subscription of IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC absolutely free. So what is this IIT, JEE, NEET Foundation and NTSC category all about? I will tell you about that. You can build the foundation for the IIT, JEE right from class 9th. So it is having the structured courses that will help you to crack the multiple Olympiads like NTSC, IMO and so on. Yes, obviously, and you can win the great national level scholarships. So you can save students 40% on your subscription price. So this is only for the first 500 CBSE learners, and the offer can be availed using the educator referral code. So you can use my educator referral code, that is TD Live. So just this is the limited time offer, and it is valid from the 11th of August 2021 to the 31st of August 2021. So students gets your subscription now. This is at limited period offer. Now let me tell you about the offer for Plus and Iconic subscription from Unacademy. The key offer जो है, it is going to end on 23rd of August 2021, that is on Monday. देखिए, this is exciting mega offers for CBSE classes from class 6 to class 12th. So offer देखिए कैसे रहेंगे. If you are having the subscription, CBSE subscription, then Plus subscription and Iconic, that is for 12, 15 and 18 months, then you can get free CBSE subscription for 2 months. If you are having this subscription for 24, 36 and 48 months for Plus or Iconic, then you can have the free CBSE subscription for 4 months. And if you are having the subscription of the Iconic or Plus, that is for 60, 72 and 84 months, then you can get the totally 6 months. Yes, obviously 6 months free CBSE subscription. So likewise, if you are having the Plus and Iconic subscription for 12, 15 and 18 months, you can get the free Creative Corner subscription for 2 months. And same in the case for the 24, 36 and 41, 44 months, 48 months का आपको अगर subscription रहेगा Plus और Iconic का, then you can get the 4 month subscription for Creative Corner, that is totally free. And the next one, that if you are having 60, 72 and 84 months Plus an Iconic subscription, then you can get the free Creative Corner subscription for 6 months. So you will be having the flat 10% discount on purchasing Plus subscription on for all the duration, and it is valid for the first 500 subscriptions only. So choices here with an Unacademy subscription, you can get the many benefits like unlimited access to 7 subjects and India's top educators to choose from. Obviously, you can get the full syllabus, that is NCERT dedicated plus courses. So subscribe now before it's too late, students. The next exams are just for the 2 months, and you can get the 10% discount using educator referral code. So you can use my code, that is TD Live, for 10% discount on Plus subscription for all the durations.
So we are having the mega launch on every Monday. So likewise for class 9, you are having the term 1 victory batch, which includes math, science, English, Sanskrit and SST, that is social sciences. So इसकी start date जो है, it is going to start on the 16th of August 2021. So वैसे क्लास 9 के लिए टर्म 1 victory batches जो है maths, science, English, Sanskrit and SST, these are going to start on the 16th of August 2021. So we are having the mega launch every Monday. हर मंडे को ये जो हमारा होता है मेगा लॉन्च होता है. And obviously for class 10th, CBSE class 10th, you are going to have term 1 victory batch for math, science, English, Hindi and SSC. And its starting date is 16th of August 2021. Now for CBSE class 10th, we are having term 1 victory batch for maths, science, English, Hindi and SST, that is social sciences, and it is also going to start with the date that is 16th of August 2022. So these are nothing but the new batches for doubt clearing and NCERT exercises. So we are having the topmost educators from India. So jaldi कीजिए, you can use my code that is TDLive for flat 10% discount. So friends, let me tell you about the basic about the plus subscription and also the advanced plan of the basic, that is iconic जो है ये plus का जो है advanced version रहेगा. देखिए plus में जो you are going to have the basic plan to get started, and yes obviously at iconic you can take your CBSE preparation to the next level with personal mentor. देखिए plus के features क्या क्या है. You are having the India's best educators as well as the interactive live classes, then live tests and quizzes, then structured courses and PDFs also. एंड इन आइकॉनिक में क्या रहेगा, प्लस के जो फीचर्स है वो सारे के सारे रहेंगे और उसके साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे. देखिए यहाँ पर भी इंडियाज बेस्ट एजुकेशनर्स रहेंगे, देन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस, देन यू आर हैविंग द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स आल्सो. सो यहाँ पर एडिशनल क्या है आइकॉनिक में, देखिए द पर्सनल मेंटर इज देयर टू सॉल्व योर डाउट्स, यू आर हैविंग द लाइव डाउट सॉल्यूशंस, live interaction with your mentors also, and yes obviously parent connect भी यहाँ पर रहेगा, that is teacher parent connection रहेगा यहाँ पर. एंड आपको आइकॉनिक का स्पेशल स्टडी पैनल जो है वो भी मिलेगा. सो यू कैन यूज माई कोड दैट इज TDLive फॉर फ्लैट 10% of discount for both, that is on the plus and iconic solutions. So you can select the plus or iconic based on your choices. So उसके plans कैसे देखिए, अगर आप लोग CBSE का क्लास 9, 10th, 11th, 12th का लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर आप क्लास 10 का लोगे तो 10th, 11th, 12th आपको साथ में मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का. तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग प्लस का देख लेते हैं. इफ़ यू आर हैविंग द 3 month सब्सक्रिप्शन देन यू हैव टू पे 7,500 for the 3 months, that is 2,500 for per month. Now if you are having the 6 month subscription then you are have to pay 10,000 for the 6 months, that is flat 33% off. Then if you are having the 12 month subscription then you are going to pay 15,000, that is 1,250 per month. If you are going for the 15 month subscription then you will have to pay 18,000. If you are going for the 18 months then you will have to pay 20,000, that is 1,111 per month. Now if you are going for the 24 month subscription then you will have to pay 25,000 for the 24 months, that is 1,042 per month. If you are going for 36 months then you will have to pay 32,000 for whole 36 months and 889 per month. If you are going for the 48 month subscription उसमें आपको क्या लगेगा 40,000, 40,000 जो है पूरा का पूरा पैकेज रहेगा and 830 will be for per month. देखिए आज जितना आप लोग ज़्यादा पैकेज लोगे उतना ही आपका बेनिफिट और डिस्काउंट जो है वो बढ़ता जाएगा. सो वैसे क्लास का 9, 10th, 11th, 12th का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन देखिए the same case for 3 months, 6 months, 12, 15, 18, 24, 36 and 40 months. देखिए यहाँ पर 3 months का सब्सक्रिप्शन जो है वो 12,000 को रहेगा with 4,000 per month.
देन नेक्स्ट वन इज 6 months 17,000 रहेगा विथ 2,833 पर मंथ. देन 12 months का रहेगा 28,000. देन 15 months का रहेगा 32,000. 18 months का रहेगा 35,000. 24 months का रहेगा 48,000. 36 months का रहेगा 66,000 एंड 48 months का रहेगा 83,000. दैट इज 1,729 पर मंथ. सो वैसे अभी आप लोग क्या कर सकते हो, क्लास 10, 11 और 12 का सब्सक्रिप्शन प्लस के लिए देख लीजिए. 3 months का सब्सक्रिप्शन आपके लिए रहेगा 7,500 रुपीज़ के लिए. 6 month का रहेगा 10,000 के लिए. 12 months का रहेगा 15,000 के लिए. 15 months का जो है आपके लिए रहेगा 18,000 के लिए. देन 18 months का आपके लिए रहेगा 20,000 के लिए. एंड 24 months का रहेगा 25,000 के लिए. एंड लास्टली 36 month का जो है वो 32,000 के लिए रहेगा. And the same case for the iconic, that is for class 10th, 11th and 12th subscription, that is 3 months का रहेगा आपके लिए 12,000. then 6 months का 17,000. 12 months का 28,000. 15 months का 32,000, that is 2,133 per month. 18 months का रहेगा 35,000 के लिए एंड 24 months का रहेगा 48,000 के लिए. ऑब्वियसली वैसे क्या रहेगा 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है लास्टली वो रहेगा 66,000 के, दैट इज 1,833 per month with 54% discount. And yes, obviously you can use my code, that is TDLive, for flat 10% off discount. So students, जल्द से जल्द आपका जो सब्सक्रिप्शन दैट इज बेस्ड ऑन योर, दैट इज प्लस और आइकॉनिक, प्लीज सब्सक्राइब करके लीजिए. चलिए फिर से एक बार अनअकैडमी का कमबैक जो है वो आ रहा है. वी आर इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज अनअकैडमी कमबैक. सो यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore एंड इट इज ऑन एवरी संडे. सो जो उसकी जो अनअकैडमी कमबैक जो लिंक है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो ये कैसे रहेगी, देखिए अनअकैडमी की हमारी जो है weekly scholarship test होगी. and yes, obviously you can start from enrolling for the free by using your Android phone also. अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है आप लोग वो भी यूज कर सकते हो. you can view the video solutions for these questions also. you can win the scholarships and exciting prizes. देखिए पढ़ाई के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, वो एक बेनिफिट रहेगा. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू कैन अपीयर फॉर द लाइव टेस्ट एंड दैट विल बी टोटली फ्री. सो इससे क्या होती है, आपकी वीकली प्रैक्टिस भी हो जाती है, सिलेबस भी आपका जो है वो कवर हो जाता है. यस, ऑब्वियसली इफ यू विन यू आर गोइंग टू हैव द स्कॉलरशिप. ठीक है, इससे भी पहले हमारे बहुत सारे कॉम्बैक जो हुए हैं, सो यू कैन पार्टिसिपेट फॉर फ्री. सो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे रहेगा, दैट इज अनअकैडमी कॉम्बैक स्कॉलरशिप टेस्ट. इट इज फॉर द CBSE क्लास 9th एंड क्लास 10th. सो आने वाला जो कॉम्बैक है दैट इज ऑन द 22nd of August 2021 at 11 AM. सुबह 11 बजे जो है आपका स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा. यू कैन विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 crore. सो इसका फॉर्मेट देखिए कैसा रहेगा. देयर विल बी टोटल 30 क्वेश्चंस. 30 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू हैव 45 minutes to solve these 30 questions. And yes, obviously tests will be there in both English as well as in Hindi language. So you can choose as per your own choice. And the exam, that is the scholarship test, will be free live, which will be available on Android mobiles. So students, jaldi kijiye, enroll now. The link is given in the description box below. So you can have the flat 10% off on Unacademy Plus and Iconic subscription. You can use my code, that is TDLive, for both Plus and Iconic subscription with flat 10% off. And you can download the Unacademy app now. Get it on the Google Play Store and you can download it on the Apple Play Store also. Try it all of the features for free using my code, that is TDLive. So students, that's all for today. We'll meet in the next session. Unacademy, let's crack it.